Hello students, welcome back in previous classes. In previous video, we have discussed about air. Today, we will know more about air. Tell me one thing kids, how do we blow the balloons? Yes, we blow the balloons by the air. So kids, today's topic is uses of air. As we know, we breathe air all the time and we can't live without air. Air is useful for us. It helps us in many works like air occupies space. Kids, if we take a balloon and blow air into the balloon, now balloon becomes bigger and bigger. When it filled with air, it shows कि एयर स्पेस लेता है. हम एयर को फुटबॉल, टायर, स्विमिंग पूल, ट्यूब एक्सेट्रा में यूज करते हैं. एयर स्पेस तो लेता है, बट इसके साथ साथ एयर में वेट भी होता है. इफ वी टेक टू बलून्स, फिल एयर इनटू वन ऑफ द बलून, नाउ वे बोथ ऑफ द बलून. हम देखते हैं कि जिस बलून में एयर फिल है उसका वेट एम्प्टी बलून से ज्यादा है. इट मीन्स एयर हैज वेट. एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें एयर की जरूरत होती है. कोई भी चीज बिना एयर के जल नहीं सकती. अगर हम दो कैंडल को एक साथ जलाते हैं और उनमें से एक कैंडल को हम ऐसे कवर कर देते हैं जिससे उसमें एयर ना जा सके, तो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जो कैंडल कवर है वो ज्यादा देर तक जल नहीं पाता. इट मीन्स एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग. एयर की हेल्प से हम काइट फ्लाई करते हैं. बिना एयर के हमारी पतंग उड़ नहीं सकती. एयर के हेल्प से वी ड्राई आवर क्लोथ्स एंड शेलिंग बोर्ड इज moved with the help of air. Air plays a very important role in our life. Without air, we can't imagine our life. But some reasons की वजह से it gets unclean, and unclean air causes many diseases like burning eyes, asthma, breathing problem, cancer, etc. Unclean air can also damage to plants, animals, lakes, rivers, etc. So kids, I think you understood today's content. Let's move for practice. Your first sentence is, if we want to burn anything, we need, and your options are water, air, soil, none of these. And your correct answer is air. Your next sentence is, we blow the balloons with the help of, and your options are water, plastic, air, none of these. Your correct answer is air. Your next sentence is, unclean air causes, and your options are diseases, rain, snowfall, none of these. And your correct answer is diseases. Your next sentence is, unclean air damage, and your options are plants, rivers, animals, all of these. And your correct answer is all of these. So kids, now we end this video here and we'll meet in next video. Till then, take care. Bye bye.